question number 1. Which of the following sequence are AP? If they are AP, find the common difference. First है 2, 4, 6, 8 and so on. This is a sequence. So start करते हैं solution. The given sequence is 2, 4, 6, 8 and so on. 2, 4, 6, 8. Here T1 equal to 2, T2 equal to 4, T3 equal to 6 and T4 equal to 8. Right? T1, T2, T3 and T4 term 1, term 2, term 3, term 4. अब इसका डिफरेंस देखते हैं कि एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या आता है. Therefore, T2 minus T1 is equal to 4 minus 2 equal to 2. T2 minus T1 देखा, T3 minus T2 equal to 6 minus 4 equal to 2. Therefore, 8 minus 6, T4 minus T3 is equal to 8 minus 6 equal to 2. So हम लोग देख रहे हैं कि the difference between any two consecutive terms, consecutive means एक के बाद एक आने वाले, जो terms का difference है वो क्या है, same है, constant है. So since the difference between any two consecutive terms is constant, therefore the given sequence is an AP. Therefore the given sequence is an AP, right? So ये क्या है, AP है. Now let's move to the question number 2. Question number 2 क्या है यहाँ पर? 2, 5/2, 3, 7/2. So the given sequence is 2, 5/2, 3, 7/2 and so on. So here T1 equal to 2, T2 equal to 5/2, T3 equal to 3 and T4 equal to 7/2. अब इसका डिफरेंस देख लेते हैं. T2 minus T1 is equal to 5/2 minus 2. 5/2 minus 2 कैसे करेंगे इसको? 2 into 2 4 और ये 4 माइनस हो जाएगा 5 में से. So 5 minus 4/2. 5 minus 4 is 1, so 1/2. Right? Therefore T3 minus T2 is equal to T3 क्या है? 3 है. 3 minus 5/2 is equal to, अब ये 2 3 is 6, 6 minus 5. 6 minus 5/2 is 1/2. Therefore T4 minus T3 is equal to 7/2 minus 3 equal to 2 3 is 6 है. 6 में से 7 में से माइनस हो जाएगा, तो 7 minus 6 equal to 2 is equal to 7 minus 6 is 1/2. So ये difference between any two consecutive terms, any two consecutive terms क्या है? Constant है. So ये क्या हो जाएगा? This is an AP since the difference between any two
consecutive terms is constant. Therefore, the given sequence is an AP. The given sequence is an AP. Understood? So इसी तरह से हम लोग को आगे के भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. So students, let's start question number 3. -10, -6, -2 and 2. So हम लोग को देखना है कि ये AP है या नहीं है. So the given sequence is -10, -6, -2, 2 and so on. Here T1 is equal to -10, T2 equal to -6, T3 equal to -2 and T4 equal to 2. Therefore, अब टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस देखते हैं. Therefore, T2 minus T1 equal to -6 minus 10 equal to -6 minus 10 means -6 plus minus plus 10 equal to क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, equal to 4. ठीक है. Therefore, T3 minus T2 is equal to -2 minus -6 -2 minus -6 -2 plus 6 equal to 6 minus 2 is 4. Therefore, T4 minus T3 equal to 2 minus -2 2 minus -2 equal to minus plus 2 plus 2 equal to 4. So the difference between any two consecutive terms is constant. Therefore, it is an AP. So इसका reason लिखते हैं. Since the difference between any two consecutive term is constant. Therefore, the given sequence is an AP. The given sequence is an AP. So question number 3 हो गया है. Now we will move to question number 4. So question number 4 क्या है? 0.3, 0.33, 0.333 and so on. So the given sequence is 0.3, 0.33, 0.333 and so on. So here T1 equal to 0.3, T2 equal to 0.33 and T3 equal to 0.333. ठीक है. So इसका डिफरेंस देख लेते हैं. Therefore, T2 minus T1 equal to 0.33 minus 0.3 equal to. अब सिंपल देखो यहाँ पर, ये 0.33 माइनस 0.3, ये क्या होगा? जैसे 0.33 है, अब ये 0.3 है मीन्स इट कैन बी रिटन एज 0.30, क्योंकि ये डेसिमल के बाद में 3 है तो इसको हम लोग 3.30 लिख सकते हैं. डिफरेंस देखो, 3 माइनस 0 इज 3,
3 minus 3 is 0 और ये 0 हो गया, 0 minus 0 0, 0.03, तो डिफरेंस कितना आ गया 0.03, राइट, 0.03 का डिफरेंस आ गया। देन therefore T3 minus T2 is equal to कितना है वो 0.333 minus 0.33 इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो ये क्या है 0.333 है और ये 0.33 है, इट कैन बी रिटन एज 0.330, राइट, 33 है, डेसिमल के बाद में 33 है तो इसको 330 लिख सकते हैं। सो यू गेट 3 minus 0 is 3, 3 minus 3 is 0, 3 minus 3 is 0 and ये 0 minus 0 is 0, तो 0.003 क्या, 0.003 है और ये फर्स्ट क्या है 0.03 है, 0.03 एंड 0.03003 ये दोनों सेम नहीं है, ये ग्रेटर है ये और स्मॉलर है, सो ये डिफरेंस क्या हो गया, कांस्टेंट नहीं आया, सिंस द डिफरेंस between any two consecutive, the difference between any two consecutive terms is not constant, therefore the given sequence is not an AP. So the given sequence is not an AP. AP नहीं है क्योंकि कोई भी दो टर्म का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं है, सेम नहीं है, ठीक है। So this was our question number 4. Now let's start question number 5. So let's start question number 5. The sequence is 0, -4, -8, -12. So the solution, the given sequence is 0, -4, -8, -12 and so on, right? So here T1 equal to 0, T2 equal to -4, T3 equal to -8 and T4 equal to -12. Okay, so therefore T2 minus T1 will be equal to -4 minus 0, -4 minus 0 is -4. Therefore, T3 minus T2 equal to 8 minus 8 minus -4 minus 8 minus -4 equal to -8 minus minus plus 4 equal to -4. Therefore, T4 minus T3 equal to -12 minus -8 -12 plus 4, sorry, plus 8 -12 minus minus plus 8 -12 plus 8 is -4. So हम लोग देख रहे हैं कि जो डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट -4 है. So since the difference between any two consecutive term is constant, therefore the given sequence is an AP. So the given sequence is an AP.
So let's start question number 6. The given sequence is minus 1 upon 5, minus 1 upon 5, minus 1 upon 5, and so on. So here T1 equal to minus 1 upon 5, T2 equal to minus 1 upon 5, and T3 equal to minus 1 upon 5. Okay? So इसका डिफरेंस देख लेते हैं टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का. Therefore T2 minus T1 equal to minus 1 upon 5 minus 1 upon 5. Minus 1 upon 5 equal to minus 1 upon 5 minus minus plus 1 upon 5 minus 1 upon 5 plus 1 upon 5 0 कैंसिल हो जाएगा. minus 1 plus 1 क्या होता है? 0 हो जाएगा. Therefore T3 minus T2 equal to minus 1 upon 5 minus 1 upon 5 equal to minus 1 upon 5 minus minus plus 1 upon 5 minus 1 upon 5 plus 1 upon 5 कैंसिल 0 हो गया. ठीक है. तो अब देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर दोनों का कांस्टेंट है. डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट. Therefore since the difference between any two consecutive terms is constant, therefore the given sequence is an AP. The given sequence is an AP. Okay. So this was our question number 6. So दो क्वेश्चन और हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और 8, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं. So let's start question number 7. उसमें जो given sequence है वो लेते हैं पहले. The given sequence is 3 plus root 2, 3 plus 2 root 2, 3 plus 3 root 2, and so on. Here T1 equal to 3, T2 equal to 3 plus root 2, T3 equal to 3 plus 2 root 2, and T4 equal to 3 plus 3 root 2. Difference between consecutive terms ले लेते हैं. Therefore T2 minus T1 equal to 3 plus root 2 minus 3. अब ये minus 3 minus 3 हो जाएगा. minus 3 इसको यहाँ पर 3 के 3 minus 3 कर लो इसको प्लस रूट 2. 3 minus 3 0 हो गया. 0 plus root 2 is root 2. इसके बाद थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म. T3 minus T2 equal to 3 plus 2 root 2 minus, अब ये दो टर्म्स हैं इसलिए इसको ब्रैकेट में ले लो. 3 plus root 2, 3 plus 2 root 2 माइनस से दोनों साइन चेंज हो जाएगी. माइनस हो गया माइनस रूट 2. अब ये 3 और माइनस 3 एक साथ लिख लो. 3 minus 3 plus 2 root 2 minus 1 root 2. ये 1 root 2 है. 3 minus 3 is 0 plus 2 minus 1 is 1. तो जैसे 2 minus 1 1 होता है तो 2 root 2 minus 1 root 2 1 root 2. तो 0 plus 1 root 2 is 0 plus root 2 is root 2, right? इसके बाद ये
T3 minus T2 हो गया. Now T4 minus T3. T4 minus T3 equal to T4 minus T3 equal to 3 plus 3 root 2 minus 3 plus 2 root 2 equal to 3 plus 3 root 2 माइनस से सब साइन चेंज हो जाएगी. 3 माइनस 2 रूट 2 इक्वल टू 3. ये माइनस ये माइनस कांस्टेंट नंबर है, इसको यहाँ पर ले लो, प्लस ये रूट वाले एक साथ लो. Therefore 3 minus 3 is 0. अब ये 3 minus 2, 3 root 2 minus root 2 is 1 root 2. So ये 1 root 2, 0 plus root 2 is root 2. तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर the difference between any two consecutive terms is constant. It is root 2. Therefore, the given sequence is an AP. Therefore, since the difference between any two consecutive terms is constant, therefore the given sequence is an AP. The given sequence is an AP. So this was question number 7. Now let's start question number 8. So let's start question number 8. The given sequence is 127, 132, 137 and so on. So solution. The given sequence is 127, 132, 137 and so on. Here T1 equal to 127, T2 equal to 132 and T3 equal to 137. Right? So difference देख लेते हैं any two consecutive terms का. Therefore T2 minus T1 equal to 132 minus 127. 132 minus 127 is 5. Therefore T3 minus T2 equal to 137 minus 132 equal to 5. So difference between any two consecutive terms is constant. Same है. That is why it is an AP, since the difference between any two consecutive terms is constant. Therefore, the given sequence is an AP. Right?